को इन्फॉर्म कर देना आप लोग। सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया एंड स्क्रीन शेयर हो गया सबके पास? Yes, sir. Okay. Okay, a very good afternoon to all of you. Let's begin with our next lesson or next chapter, that is financial affairs. हम लोग अभी जनरल नॉलेज के सेकेंड लेक्चर में हैं एंड सेकेंड लेक्चर इज ऑल अबाउट द financial affairs. Current development in banking, or a brief about the Reserve Bank of India. The Reserve Bank of India was established on April 1, 1935 in accordance with the provisions of the Reserve Bank of India Act 1934. यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ, अगर आपको पूछा गया क्वेश्चन में एंड आपको उधर ऑप्शंस दे दिए गए तो आप लोग कौन सा डेट चूज करोगे? April 1, 1935. Under which act? Under the Reserve Bank of India Act 1934. The central office of the Reserve Bank was initially established in Calcutta, which was permanently moved to Mumbai in 1937. यानी कैलकाटा में पहले तो एस्टैब्लिश किया गया उसका सेंट्रल ऑफिस, लेकिन बाद में उसको परमानेंटली कहाँ मूव कर दिया गया? द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, जो कि है मुंबई, 1937 में। द सेंट्रल ऑफिस इज वेयर द गवर्नर सिट्स विद वेयर पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड। कहाँ सेंट्रल ऑफिस कौन सी जगह होती है? जहाँ पे गवर्नर बैठते हैं एंड साथ ही साथ पॉलिसीज फॉर्मुलेट किए जाते हैं। ओके। So originally privately owned, since nationalization in 1949, the Reserve Bank is fully owned by the Government of India. Government of India के द्वारा ये हो गया है लेना। Main functions of RBI. Number 1, मॉनिटरी अथॉरिटी। आप लोग मोरलेस इसको इकोनॉमिक्स में भी पढ़े हुए हो गए कि आप लोग को मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो इंडियन इकोनॉमिक्स का पार्ट है उसमें आप लोगों को पढ़ना पड़ता ही होगा। व्हाट इज सेंट्रल बैंक, व्हाट इज स्टेट बैंक, है ना? तो उसमें से सेंट्रल बैंक यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक है वो नहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके जो जो पावर्स हैं, फंक्शंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है, कैसे फंक्शन करता है, वो आप लोग पढ़े ही होंगे। आज उन्हीं चीजों के बारे में थोड़ा हम लोग इधर भी जीके में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इधर पढ़ेंगे मॉनिटरी अथॉरिटी फर्स्ट। तो देखते हैं। फॉर्मुलेट्स, इम्प्लीमेंट्स एंड मॉनिटर्स द मॉनिटरी पॉलिसी, यानी मॉनिटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और मॉनिटरी पॉलिसी को मॉनिटर भी किया जाता है। ऑब्जेक्टिव, maintaining price stability while keeping in mind the objective of growth. प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना दिमाग में क्या रखते हुए? ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। नंबर 2, regulator and supervisor of financial system, prescribes broad parameters of banking operations within which the country's banking and financial systems function. Okay? ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम, पब्लिक का कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए सिस्टम में। प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट, डिपॉजिट जो लोग करते हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज टू द पब्लिक। कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज किसको प्रोवाइड करना? पब्लिक को, यानी मेरे और आपके जैसे लोगों को। नेक्स्ट देखो, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, manages the foreign exchange under the Management Act कितना? 1999। ऑब्जेक्टिव क्या है? facilitate external trade and payment and promote orderly development and maintenance of foreign exchange market in India। यानी क्या facilitate करने के लिए? foreign exchange जो भी होता है इंडिया में उसका डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस को। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन है जो 1999 में पैदा हुआ है? जो भी 1999 में पैदा हुआ है उनके लिए इजी हो जाएगा याद रखना, है ना? आप लोग बस इसको इस हिसाब से याद रखना। फॉर एग्जाम्पल मान लो स्नेहेश पैदा हुआ है 1999 में,
एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं और संपद पैदा हुआ है सपोज 1998 में। कोई इधर हम पढ़ाते समय दिखा रहे हैं कि कोई एक्ट है जो 1998 का है, तो संपद कैसे याद रखेगा कि मेरे बर्थ ईयर ये, एंड जो 1999 का एक्ट है यानी मेरे फ्रेंड स्नेहेश के बर्थ ईयर पे ये हुआ था। और स्नेहेश कैसे याद रखेगा 1999 में जो भी हुआ था वो मेरे बर्थ ईयर पे हुआ था, एंड जो दूसरा एक्ट है 1998 का वो मेरे फ्रेंड संपद के बर्थ ईयर में हुआ था। ये छोटा छोटा ट्रिक्स है डेट्स याद रखने का, आप लोग ऐसे करके याद रख सकते हो। अगर आप लोगों के घर में दादा दादी नाना नानी, जिसको हम लोग दीदा दादू कहते हैं बांग्ला में, है तो उनका बर्थ ईयर के आसपास भी देखो, किसी के अगर बिफोर इंडिपेंडेंस में है, किसी के आफ्टर इंडिपेंडेंस में है, तो ऐसे ऐसे जो डेट्स आएंगे आप लोग उनके बर्थ ईयर के हिसाब से भी याद रख सकते हो। ओके, आपको ट्रिक समझ में आ रहा है जो ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को? Yes, sir. Okay. Issuer of currency issues and exchanges or destroys currency and coins not fit for circulation। यानी इशू करते हैं करेंसी, आरबीआई ऑब्वियसली करेंसी इशूअर है, एक्सचेंज करते करेंसी, फॉरेन करेंसी लेके इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने का काम है उनका, या इंडियन करेंसी लेके फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करने का काम है उनका। और डिस्ट्रॉय करना, हम लोगों के इधर डिमोनेटाइजेशन हुआ था, याद है आप लोगों को 2016 में 500 and 1000 के नोट्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे। तो डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं कॉइन्स एंड करेंसीज दोनों जो भी सर्कुलेशन में है। यस, नया 10 का नोट, नया 20 का नोट, नया 50 का नोट, नया 100 का नोट, नया 200 का नोट, नया 500 का नोट, नया 2000 का नोट, है ना? तो ऐसे है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गिव द पब्लिक एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ सप्लाईज ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स एंड इन गुड क्वालिटी। ओके, नेक्स्ट है developmental role, performs wide range of promotional functions to support national objectives। वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शंस चलाते हैं किस चीज को सपोर्ट करने के लिए? जो भी नेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं यानी नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 6 देखो, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स, introduces and upgrades safe and efficient modes of payment systems in the country to meet the requirement of the public at large। यानी इंट्रोड्यूस करते हैं और अपग्रेड करते हैं सेफ एंड इफेक्टिव मोड ऑफ पेमेंट सिस्टम्स, जो भी पेमेंट मोड ऑफ मतलब पेमेंट सिस्टम्स है कंट्री के अंदर, क्या करने के लिए? जो पब्लिक के नीड्स है, वांट्स है, रिक्वायरमेंट्स है, उनको मीट करने के लिए एट लार्ज यानी एज अ होल। ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, रिलेटेड फंक्शंस, बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, performs the merchant banking function of the central and the state governments, so acts as their banker। ये सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही बैंकर के हिसाब से ट्रीट करता है और साथ ही साथ इसीलिए उनका बैंकर कहलाता है। बैंकर टू बैंक्स मेंटेन्स बैंकिंग अकाउंट्स ऑफ ऑल स्केड्यूल्ड बैंक्स, सभी स्केड्यूल्ड बैंक्स के अकाउंट्स मेंटेन करता है ये। RBI has 27 regional offices, most of them in the state capitals of 04 sub-offices, banking sectors in news. Okay. Announcement in Union Budget. In the Union Budget 2020, Srimati Nirmala Sitharaman, Honorable Finance Minister, announced the following related to financial sector. Government reforms to be carried out to bring in transparency and greater professionalism in the PSBs. Few PSBs to be in क्या बोलते हैं, encouraged to approach the capital market to raise additional capital
नेक्स्ट देखो, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC has been permitted to increase deposit insurance coverage for a depositor, which is now rupees 1 lakh to rupees 5 lakh per depositor. यानी 1 lakh से 5 lakh पे ये ट्रांसफर कर दिया गया है पर डिपॉजिटर. Scheduled क्या बोलते हैं, commercial banks health under monitoring through a robust mechanism keeping depositors money safe. डिपॉजिटर्स के मनी सेफ रखने के लिए स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के हेल्थ को लगातार मॉनिटर किया जाएगा. नेक्स्ट देखिए, कोऑपरेटिव बैंक्स विल बी स्ट्रेंथेंड बाय अमेंडिंग बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट फॉर इंक्रीजिंग प्रोफेशनलिज्म, enabling access to capital and improving governance and oversight for sound banking through the RBI. यानी कोऑपरेटिव बैंक्स को स्ट्रेंथन करेंगे कैसे? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के द्वारा, इंक्रीज क्या करके प्रोफेशनलिज्म, एनेबल क्या करके एक्सेस टू कैपिटल एंड इंप्रूविंग गवर्नमेंट एंड ओवरसाइट फॉर साउंड बैंकिंग थ्रू द RBI. The limit for NBFCs to be eligible for debt recovery under the securitization and reconstruction of financial assets and reinforcement of security interest SARFAESI Act 2002 is proposed to be reduced from rupees 500 crore to asset size of rupees 100 crore or loan size existing rupees 1 crore to 50 lakh. इन सब पॉइंट्स को आप लोगों को याद रखना है. To meet the needs of the greater private capital, it is proposed to sell the balance holding of the Government of India, IDBI Bank, to private, retail and institutional investors through the stock exchange. Okay? Just a minute. Just a minute, huh? Okay, देखो, financial market, deepening bond market. Certain specific categories of government securities to be opened fully for non-resident investors also. यानी certain specific जो categories है government securities के लिए, वो किन के लिए open किया जाएगा? Fully non-resident investors. FPI limit in corporate bond increases to 15% from 9% of its outstanding stock. 9% से 15% increase हो गया है. 9% से 15% तक चला गया है FPI limit in corporate bonds. New legislation to be formulated for laying down a mechanism for knitting of financial contracts. यानी न्यू लेजिस्लेशन ले डाउन किया जाएगा. मैकेनिज्म किस चीज के लिए? निटिंग डाउन फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स. स्कोप ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स टू एक्सपैंड. स्कोप ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट जो है वो स्वैप करता है एक्सपैंड होने के लिए. ओके. Debt based exchange trade fund expanded by a new debt ETF consisting primarily of government securities to give attractive access to retail investors
pension funds and long-term investors. यानी जो डेट बेस्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है उनको एक्सपैंड कैसे किया जाएगा? न्यू डेट ETF से consisting primarily of government securities to give access to attractive access to retail investors को access देने के लिए pension funds and long-term investors. A partial credit guarantee scheme for the NBFCs formulated post the Union Budget 2019-20 to address the liquidity constraints. यानी पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम किसको दिया जा रहा है? एनबीएफसी को फॉर्मुलेट क्या करने के लिए? पोस्ट फॉर द यूनियन बजट 2019 and 20 to address the liquidity constraints. Okay. Mega bank merger. The biggest public sector banks, PSBs, have been merged into 4. India will now have 12 public sector banks from 27 in 2027. The merger of banks was announced by the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman on August 30th, 2019. The banks which were merged together are Punjab National Bank, Oriental Bank of Commerce, United Bank of India, Indian Bank, Allahabad Bank, Canara Bank, Syndicate Bank, Union Bank of India, and Andhra Bank and Corporation Bank. The government also unveiled governance reforms in public sector banks, providing their boards greater autonomy, flexibility to fix sitting free of independent directors, longer terms to directors at management committee of the boards. ठीक है, यानी जो भी मेगा बैंक मर्जर में जो बैंक है उनको याद रखना है, उनका क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव है उसको याद रखना है, उनका डेट याद रखना है और किसके अंडर में हुआ था ये चीज आप लोगों को याद रखनी है. ओके. Key highlights: Punjab National Bank, Oriental Bank of Commerce and United Bank of India to merge to form the country's second largest lender. The merger of Syndicate Bank and Canara Bank will create the fourth largest public sector bank with rupees 15.20 lakh crore business and a branch network of 10,324 branches. Andhra Bank and Corporation Bank will merger with Union Bank of India will create India's fifth largest public sector bank with 14.59 lakh crore business and 9,609 branches. The merger of Allahabad Bank with the Indian Bank will create the seventh largest public sector bank with 8.08 lakh crores business with the strongest branch networks in the south, north and east of the country. ये आप लोग फिगर्स को याद रखना और कौन सा बैंक किसके साथ मर्ज हो रहा है याद रखना और कितना लार्ज है, फर्स्ट लार्ज, सेकंड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, सेवेंथ लार्जेस्ट, कितना, ये टेबल को ही आप लोग याद रखोगे. Revision in norms for the concurrent audit system of banks. The Reserve Bank of India, RBI, has revised the norms of concurrent audit system of banks. Concurrent audit aims at shortening the interval between transactions. यानी जो दो transactions के बीच में जो audit होता है उसके क्या बोलते हैं आपका audit को interval को कम कर देना. And its independent examination, उसका independently उसको examine करना. Some of the revised norms include the option to consider. Some of the revised norms क्या include करते हैं? Option to consider whether concurrent audit should be done by the bank's own staff or external auditors. अंदर के लोग करें या बाहर के लोग, which may include retired staff of its own bank, continues to be left to the discretion of individual banks. Okay? The revised norm states that head of internal audit in the bank should participate in the selection of concurrent auditors where such functions in outsourced and should be responsible for the quality review including skills of the staff employed. Including क्या?
skills of the staff employed, of the work of the concurrent auditors reporting to her or him, यानी him or her, जिसको भी report किया जा रहा है. The norms further state that the bank should frame a policy for fixing accountability in cases of serious acts of omission, commission noticed in the working of bank's own staff or retired staff working as concurrent auditors, जो भी auditor के जैसे काम कर रहा है. A quarterly review containing important features brought out during concurrent audits should be placed before the audit committee. Audit committee के सामने रखना of the board of directors ACB or local management committee LMC. The zone-wise findings of concurrent audit may be reported to ACB or LMC on a quarterly basis. यानी quarterly basis में मतलब कितने क्वार्टर्स होते हैं एक साल में? 4 क्वार्टर्स ना, यानी एवरी 3 मंथ्स एक क्वार्टर होता है. Banning of Unregulated Deposit Schemes Act 2019. The Parliament approved the banning of Unregulated Deposit Schemes Bill 2019. It will help to tackle the menace of implicit deposit taking activities in the country which are present at exploiting regulatory gaps and lack of strict administrative measures to dupe poor and gullible people of their hard earned savings. यानी उनके सेविंग्स से जिससे वो लोग हाथ ना धो बैठे, उनका सेविंग्स पानी में ना चला जाए, वेस्ट ना हो. The Act provides for a mechanism to ban unregulated deposit schemes and protect the interest of depositors. Okay. It amends 3 laws, that is the Reserve Bank of India Act 1934, the Securities and Exchange Board of India Act 1992, and the Multi-State Cooperative Societies Act 2002. ये सब आप लोगों को याद रखना है. Next देखो, State Bank of India revised service changes with effect from WEF, यानी with effect from October 1, 2019. The State Bank of India has revised service charges for deposit and withdrawal on October 1, encompassing cash withdrawal, average monthly balance, deposit withdrawal with effect scores of customers in many ways. On maintenance of average monthly balance AMB starting October 1, SBI has reduced the minimum average monthly balance requirement of urban customers from 5,000 to 3,000. यानी 5,000 से 3,000 कर दिया गया है. Under the revised results, if someone does not maintain 3,000 as average monthly balance and falls short by 50%, that is 1,500, the individual, just a minute. सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो, is the screen visible to everyone? Yes, sir. Okay. Okay, तो क्या कहाँ पे थे हम लोग? Under the revised rules, if someone does not maintain rupees 300 average, अच्छा इधर तक तो किए थे, that is rupees 1,500. That is rupees 1,500, the individual will be charged rupees 10 plus GST
If the account holder falls short by more than 75%, it will invite a fine of rupees 15 plus GST. Okay. The semi-urban branches SBI account holder needs to maintain an average monthly balance of rupees 2000. In rural branches, the minimum average monthly balance will be rupees 1000. Okay. If the shortfall is less than 50% for the semi-urban branches, then the extra rupees 7.5 plus GST for between 50 to 50 for 50 to 75%, the fine will be 10 plus rupees 10 plus GST, and for above 75% shortfall, the charge will be rupees 12 plus GST. In case of AMB of rupees 1000 at rural branches, a shortfall of rupees less than 50% charges rupees 5 plus GST. Shortfall of over 50% to 75%, the fees will be rupees 7.5 plus GST, and shortfall of 75% and above attracts a fine of rupees 10 plus GST. Okay, National Electronic Funds Transfer NEFT and Real-Time Gross Settlement RTGS charges have also changed. While NEFT and RTGS transactions through digital means are free, fees are imposed at branches. NEFT transactions up to rupees 10,000 will invite rupees 2 plus GST charges. For a transaction above 2 lakh and via NEFT, the bank will charge rupees 20 plus GST. For RTGS transfer, rupees 2 lakh plus to 5 lakh, customer must pay rupees 20 plus GST. RTGS transfer above 5 lakh will be charged rupees 40 plus GST. As per the new charges of deposit and withdrawal, cash deposits in savings account will be free for up to 3 transactions in a month. After that, the account holder will be charged rupees 50 plus GST for every transaction. The maximum limit of deposit of cash at non-home branch is rupees 2 lakh per day. Thereafter, non-home branch manager gets to decide if the branch can accept more cash. Meanwhile, account holders with an average monthly balance of rupees 25,000 can perform free cash withdrawal twice a month. Those with average monthly balances between 25,000 to 50,000 can avail 10 free cash withdrawals. Charges for transactions beyond the free limit are 50 plus GST for above 50,000 up to 1 lakh. The charges of rupees 15 plus GST will those above 1 lakh have unlimited transactions. ये सब आप लोगों को याद रखना है, ध्यान से घर पे पढ़ोगे आप लोग. RBI restricts PMC banks operations. The Reserve Bank of India RBI has put Punjab and Maharashtra Cooperative Bank under directions for 6 months. This means a restriction of the bank's functions like lending and withdrawing by customers. As directions, a depositor will be allowed to withdraw a sum exceeding rupees 1,000 rupees rupees 1,000 only of the total balance in every savings bank account or current account or any other deposit account, while whatever name called, subjected to conditions stipulated in the RBI directions. Punjab and Maharashtra Cooperative Bank Limited, Mumbai, Maharashtra, without prior approval is written from the Reserve Bank, will also not be able to grant or renew any loans and advances, make any investments, incur and liability, including borrowal of funds and acceptance of fresh deposits, disburse or agree to disburse any payment, whether in discharge of its liabilities and obligations or otherwise.
enter into any compromise or arrangements to sell, transfer, or otherwise deposit any of its properties or assets except as notified in the RBI directions dated September 23, 2019. The directions shall remain in force for a period of 6 months from the close of business of the bank on September 23, 2019. इस चीज को याद रखना और ध्यान से पढ़ना. ICICI Bank to open 450 new branches. On September 23, 2019, ICICI Bank announced expansion of its retail network in the country by adding 450 new branches in the financial year 2020. Of these, the bank already added 320 branches so far and has also crossed the milestone of having 5,000 branches across the country. The milestone branches was set up at Thane in Maharashtra. Thane बोल के एक जो जगह है महाराष्ट्र में, वहां पे सेटअप किया गया है. Current developments in financial or stock markets. Disinvestments in LIC. On disinvestment, the Financial Minister in the Union Budget 2020 speech announced to sell a part of its holding in LIC by way of initial public transfer IPO. She mentioned that listing of companies of stock exchanges discipline a company and provides access to financial markets and unblocks its value. It also gives opportunity for retail investors to participate in the wealth so created. Tax concessions for foreign investments. In order to incentivize, okay, incentives होगा ये, I guess. क्या? Incentives, okay. In order to incentivize the investment by the sovereign wealth fund of foreign governments in the priority sectors, the Union Budget 2020 proposed to grant 100% tax exemption or to the interest, dividend and capital gains income in respect of investment made in infrastructure and other notified sectors before 31st March 2024 and a minimum stock in period of 3 years. Abolition of dividend distribution tax DDT and concessional corporate tax CCT. In order to increase the attractiveness of the Indian equity market and to provide relief to a large class of investors, Union Budget 2020 has proposed to remove DDT and adopt a classical system of dividend taxation under which the companies would not be required to pay DDT. The dividend shall be taxed only in the hands of the recipients at their applicable rate. The move will encourage more distribution of profits by companies, thereby also increasing the purchasing power of the shareholders. It will attract global investors and more funds into the economy to set up their operation in India. In order to remove the cascading effect, it also proposed to allow deduction from the dividend received by holding company of its subsidiary. ये याद रखना. ओके, अब इधर कुछ रेट के बारे में बता देखते हैं. India stays globally competitive and favored destination for investment. A bold historic decision has been taken to reduce the corporate tax rate for a new companies in the manufacturing sector to an unprecedented level of 15%. To existing companies, the rate has been brought down to 22%. As a result, corporate tax rates now amongst the lowest in the world. Reduction of corporate tax rates. Number A में आ जाओ. In order to promote growth and investment, a new provision has been inserted in the Income Tax Act with effect from financial year 2019-20.
which allows any domestic company any option to pay income tax at the rate of 22% subject to condition that they will not avail any exemption, and कोई भी exemption नहीं लेंगे, or incentive. The effective tax rate for these companies shall be 25.17% inclusive of surcharge and cess. Okay. Also, such companies shall not be required to pay minimum alternate tax in order to attract fresh investment in manufacturing and thereby provide boost to Make in India hoga initiative of the government. Another new provision has been inserted in the Income Tax Act with effect from financial year 2019-20, which allows any domestic company incorporated on or after 1st October 2019 making fresh investment in manufacturing an option to pay income tax at the rate 15%. The benefit is available to companies which do not avail any exemption or incentive and commences their production on or before 31st March 2023. The effective tax rate for these companies shall be 17.01 inclusive of surcharge and cess. Also, such companies shall not be required to pay minimum alternate tax. Next, देखो, a company which does not opt for the concessional tax regime and avails the tax exemptions or incentives shall continue to pay tax at the pre-amended rate. However, these companies can opt for the concessional tax regime and expiry of the tax holiday or exemption period. After the exercise of the option, they shall be liable to pay at the rate of 22% and opt once exercised cannot be subsequently withdrawn. Further, in order to provide relief to companies which continue to avail exemptions or incentives, the rate of minimum alternate tax has been reduced from 18.5 to 15%. In order to stabilize the flow of funds into the capital market, it has provided that enhanced surcharge introduced by the Finance Number 2 Act shall not apply on capital gains arising on sale of equity shares in the company or unit of an equity-oriented fund or a unit of business trust liable for securities transaction tax in the hands of an individual HUF, AOP, BOI, AJP. Okay? ये सब आप लोगों को घर पे पढ़ पढ़ के याद करना ही पड़ेगा, थोड़ा लॉजिकली पढ़ोगे तो सब याद रहेगा. The enhanced surcharge shall not apply to capital gains arising on sale of any security including क्या बोलते हैं derivatives in the hands of foreign portfolio investments FPIs. In order to provide relief to listed companies which shall already made a public announcement to buy back before 5th July 2019, it is provided the tax on buyback of shares in case of such companies shall not be charged. And last point, देखो, the government has also decided to expand the scope of CSR 2% spending. Now, CSR 2% funding can be spent on incubators funded by central and state government of any agency or public sector undertaking of central or state government and making contributions to public funded universities, IITs, national laboratories and autonomous bodies established under the auspices of ICAR, ICMR, CSIR, DAE, DRDO, DST, Ministry of Electronics and Informative Technology, engaged in conducting research in science, technology, engineering and medical aimed at promoting SDGs. ये सब पॉइंट्स आप लोग को घर में पढ़ना पड़ेगा. ओके, सो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है. मोरलेस आप लोगों को ये जीके जो है
वो घर पे चाहे हम आपको कितना भी एक्सप्लेन कर दे या पढ़ा दे, घर पे आप लोगों को ये सब गो थ्रू करना ही पड़ेगा, एंड वो भी लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। ओके, आज इधर तक ही रखते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके, चलो रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं।